Namaskar. The topic that we will be discussing today is Buddhist Council. This is a very important topic from ancient India part. अब ये important क्यों है? कई बार प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली इन स्टेट पीसीएस डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है. कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा काउंसिल कब हुआ था, किस काउंसिल में, व्हाट वर द इश्यूज. That is the reason we have structured our lecture in such a manner that you will get an overall idea of all the Buddhist councils and a clarity regarding what was held in which council. ठीक है? So what we have done is हमने हर Buddhist council को 5 पार्ट में डिवाइड किया है. The first one would be the king under whose patronage it was held. Then the year जिस साल में ये हुआ था. Then the venue कि Buddhist council हुआ कहाँ था. Then under whose leadership it was held, and the last one would be the issues that were dealt in the council. ठीक है? Now, most of the places you would have read that there were 4 Buddhist councils. However, there were 6 Buddhist councils. The later 2 were held out of India. That is, the 5th Buddhist council was held in Burma. Mandalay में हुआ था, जो कि बर्मा में है, in 1871. And the 6th Buddhist council was also held in Burma, in Rangoon, 1954. ठीक है, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें खाली यही 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि इंडिया में हुए थे उनके बारे में जानना है. ठीक है, अब पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाई वर दीज काउंसिल्स हेल्ड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दीज काउंसिल्स. सो क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्धिस्ट मंक्स जो थे, देयर वर सम डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग हाउ टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर्स एंड what discipline they should follow and to revise and correct the contents of the sutras. To deal with all these matters which arose from time to time, these councils were held. Let's discuss the first Buddhist council. तो first Buddhist council 483 BC में हुआ था. किंग अजातशत्रु की पेट्रोनेज के अंदर हुआ था. अभी कहाँ हुआ था? सत्यपानी केव्स हैं राजगृह में, which is the present day राजगीर. This was held there. Under whose leadership? एक बुद्धिस्ट मंक थे महाकश्यप, उनकी लीडरशिप के अंदर दिस काउंसिल वाज हेल्ड. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट वर द इश्यूज दैट वर डिस्कस इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल. सो 2 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट का जो है कंपाइलेशन इसी काउंसिल में हुआ था. वो 2 टेक्स्ट क्या थे? पहला टेक्स्ट हमारा था सुत्त पिताका, उसको जो है रिसाइट किया था आनंदा ने. व्हाट डज दिस टेक्स्ट कंटेन्स? इस टेक्स्ट में जो बुद्धा की सेइंग्स हैं वो हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेकेंड टेक्स्ट विच इज विनय पिताका. इसको बनाया था उपाली ने. एंड दिस टेक्स्ट कंटेन्स द मोनास्टिक कोड्स, द डिसिप्लिन्स दैट द बुद्धिस्ट मंक्स हैव टू फॉलो. ये सब इसमें डिस्कस हुआ. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 483 BC में हुआ, किंग अजातशत्रु की पेट्रोनेज के अंदर हुआ, राजगृह में हुआ, महाकश्यप मंक के लीडरशिप के अंदर हुआ, एंड कंपाइलेशन ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दैट इज सुत्त पिताका और विनय पिताका इस काउंसिल में हुआ था. लेट्स डिस्कस द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन ईयर 383 BC अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक हु बिलोंग टू द शिशुनाग डायनेस्टी. ठीक बात. अब क्या हुआ, कहाँ पे हुआ था ये? दिस वाज हेल्ड इन वैशाली विच इज अ सिटी इन प्रेजेंट डे बिहार, and it was held under the leadership of Sabakami. अब डिस्कस करते हैं the issues of the second Buddhist council. So over a period of time, the Buddhist monks of the Vaishali region they started following more relaxed form of discipline. So इस बात पे जो है जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था उन्होंने आपत्ति जताई. उनका कहना ये था कि this is not the right form of discipline. This is not the right form of Buddhism. So to arrive at a consensus कि what exactly should be the rules of discipline that the Buddhist monks should follow, this second council was held. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस काउंसिल का जो आउटकम था वो ये था कि जो बुद्धिस्ट संघ था that was divided in 2 sections. On one hand there was the orthodox section which were the Sthavardins who supported the strict code of discipline. On the other hand there were these Mahasangikas which were the unorthodox section and they supported that the relaxed form of discipline should be followed. So that was the outcome of this second Buddhist council. Now let's have a quick recap. 383 BC, काल अशोक वैशाली में हुआ था.
साबाकामी के लीडरशिप के अंदर हुआ था एंड द आउटकम ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघ इनटू two groups, the Sthavardins, that is the orthodox section, and the second group was Mahasangikas, which is the unorthodox section. Let's discuss the third Buddhist council. This council was held in the year 250 BC under the patronage of King Ashok. Here lies an interesting fact. King Ashok, as you all know, belonged to the modern dynasty, and all the three rulers of the modern dynasty practiced different religions. Chandragupta Maurya, who was the founder of the dynasty, adopted Jainism. The second one was Bindusara, who practiced Brahmanism, and King Ashok practiced Buddhism. अब हम आते हैं वेन्यू पे. This council was held in Patliputra, which is in present day Patna, that is बिहार में है. अब इसको किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ था? This was held under the leadership of मोगलीपुत्र तिस्सा, जिनको हम उपगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, एंड ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ किंग अशोक. अब हम डिस्कस करते हैं द इश्यूज, द स्पेसिफिक्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. तो पहला इशू वुड बी, जैसा कि आपको याद होगा कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो डिबेट हुई थी उसके बाद दो पार्ट में बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हो गया था, स्थावर्दिन्स एंड महासंगिकास. In the third Buddhist council, it was established that the Sthavardins are the true followers of Buddhism. The second important specific is that a new text was compiled in this Buddhist council. As you remember, in the first Buddhist council, दो टेक्स्ट कंपाइल हुए थे, विनय पिताका एंड सुत्त पिताका. तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और टेक्स्ट कंपाइल किया गया which was known as the Abhidham Pitaka, and this text contained the philosophies of Buddhism. तो अब हमारे पास बुद्धिज्म को लेके तीन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गए थे, विनय पिताका, सुत्त पिताका एंड अभिधम पिताका. दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. लेट्स हैव अ क्विक रीकैप. 250 BC में हुआ, किंग अशोक ने करवाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मोगलीपुत्र तिस्सा. कहाँ पे हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा. एंड दो इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक्स थे, Sthavardins were established as the true followers of Buddhism, and the second one was the text, that is Abhidham Pitaka, was compiled in the third Buddhist council. Let's discuss the fourth Buddhist council. This council was held in the year 100 AD. AD है, BC नहीं है, ध्यान रखिएगा. And this was held under the patronage of King Kanishk, who belonged to the Kushan dynasty, and this was held in Kashmir. अब किसकी लीडरशिप में हुआ था? Under the leadership of Vasumitra. Now let's discuss the important specifics of the fourth Buddhist council. There were three important specifics. The first one was the division of Buddhism in Hinayan and Mahayana. याद रखिएगा, this important division of Buddhism into Hinayan and Mahayana was done in the fourth Buddhist council. Up, let's move on to the second point. The deliberations were held in Sanskrit instead of Pali. जो हमारे initially 3 Buddhist councils थे, उसमें जो deliberations था was done in Pali, which was the language of common people. Whereas the fourth Buddhist council, the deliberations were held in Sanskrit, which was the language of the upper class and the more learned people. And the third important specific was, it was decided that effort should be made to spread Buddhism to other Asian countries. This is all about the fourth Buddhist council. Let's have a quick recap. 100 AD, King Kanishk के patronage में कश्मीर में हुआ था. वासुमित्रा was the leader, and important specifics क्या थे? Division of Buddhism in Hinayan and Mahayana. ये डिसाइड हुआ कि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया जाए और एशियन कंट्रीज में, एंड deliberations were held in Sanskrit instead of Pali. This is all about the 4 Buddhist councils. So, we have discussed all that is important regarding Buddhist council, and it is of paramount importance that you remember all the important specifics that we have discussed. So, I would suggest you to watch this video a few times ताकि आपको सारे specifics याद रहें और साथ ही साथ आपका रिविजन हो जाए.
For any doubts, please comment below.